So here we begin, and Deepak ji, you are welcome to ask anything anytime. And my slides show is very badly organized, but I am trying to divide it into 3 or 4 sections. The first inning in NASA is 68 to 72. The second inning is ISRO 73, 73 to 78. Then 73 to 78, and then again NASA from 96 to 99, and thereafter in various other organizations that I list. I have about 100 slides, therefore please don't ask unless it is important. Do not ask in the first 15 or 20 minutes unless it is very important. So I can at least finish showing what I plan to show you or share with you. And unfortunately, it is all about me. So I'm specially asking my nephew to forgive me because he's been telling me, as all the children should tell their elders, that don't be self centered. But it is about me, so please forgive. Here, who gave us the vision for the Apollo program? John F. Kennedy. You see him? Yes. That put an entire nation. Of course, the inner motivation was to compete with Soviet USSR, but it also brought everybody's uh, energies together with about 140,000 people. 1.5 lakh लोग काम कर रहे थे. Do you see the guy in the hat there, out in the back of Kennedy? As soon as within our reaching the US, within couple of months, President Kennedy was no more, and the guy in the hat was Johnson who took over this program. So somebody had the vision, somebody else was present during execution. Here are the people whom I just admire and respect. And I'm going to spend 1 or 2 minutes on the first one here. Do you see my pointer? And the second one here. Chuck Matthews and Von Braun. These are the first 2 names also. George Miller was ahead, and then there is at the end of this, the guy with the long nose is Dick Slayton, I think. But these are the people I have lived and worked with every week for 4.5 years. Chuck Matthews would take me to Houston on Wednesdays and Huntsville on Thursdays, same trip. We would, as team of consultants called Bell Labs, we were 400 people doing everything for NASA for Apollo program. And we were coordinating these remaining 140,000 people. 1.5 लाख लोगों का काम हम ऑर्गेनाइज कर रहे थे, क्योंकि हम उस समय के सबसे बड़े रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बेल लैब्स के मेंबर्स, और हमको नासा के ऑर्गेनाइजेशन में लिस्ट किया गया था, इसलिए हम सारे प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए नासा के ही पार्ट। तो पहला व्यक्ति तो वो है जो पर्सनली बहुत मेंटर करता था, और दूसरा व्यक्ति वो है जो दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस रॉकेट साइंटिस्ट है। मेरे को बिलोंग करते हैं या विजिट करते रहे हैं सदा भाई, 2 भाई वहाँ काम किए हुए हैं, और मैं वहाँ 68 से जाता रहा। तो फॉन ब्राउन को हिटलर ने करीब करीब कैद कर रखा था और उससे V2 रॉकेट बनवाए थे। पर यही फॉन ब्राउन 2 बार इंडिया आए हैं, एक बार मेरे इनविटेशन पे आए हैं, एक बार इनसेट का सोल्यूशन ऑफर करने आए हैं, और इन्होंने मेरे साथ अहमदाबाद में बैठकर गुजराती खाना थाली में पुरोहित और चेतना वगैरह में खाया है, और खजुराहो और आगरा और दिल्ली, बेंगलोर सब जगह गए हैं। बस ये हिस्ट्री मैं आपको कहना चाहता था। ये इनके इंट्रोडक्शंस हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया। ये कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व थे अपोलो को बनाने में।
बोइंग ने तो सैटर्न रॉकेट बनाया जिस पर अपन काफ़ी बातें करेंगे। इसकी 3 ही स्टेजेस काम में आई, पांचों स्टेजेस नहीं आई, S1, S2 और S4 भी। और इसमें फ्यूल्स थे जैसे ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन, और थ्रस्टर्स थे जो अनसिमेट्रिक डाई मिथाइल हाइड्रेट से बनी हुई थी, UDMH। और नॉर्थ अमेरिकन रॉकवेल, जिसको रॉकवेल इंटरनेशनल बाद में कहते थे, उसने ये जिस जिस कक्ष में ये रहते हैं वे ये एस्ट्रोनॉट, वो बनाया था। वैसा का वैसा ही अब ओरायन बन रहा है, करीब करीब स्केल अप। तीसरा जो लूनर लैंडिंग मॉड्यूल था, जिसमें हमारे चंद्रयान के लिए काफी सबक सीखने को अभी भी बाकी है, वो ह्यूमन वाला था, ये अनह्यूमन था चंद्रयान विक्रम वाला। लेकिन इनमें कनेक्शन है, वो आपको बताएं। और कई चीजें थी। लूनर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पैकेज, जिस पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो चंद्रमा पे छोड़ते रहे। 7 बार छोड़ा है एस्ट्रोनॉट्स ने, 6 बार। ये वो रॉकेट है जिसको उस मनीषी ने बनाया है, वो फॉन ब्राउन, जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसकी फोटो हम देख रहे थे। कुतुब मीनार से 1.5, 1.5 कुतुब मीनार। आईफल टावर हमको मालूम नहीं कितना बड़ा, लेकिन इससे छोटा। ये देखिए, डॉक्टर फॉन ब्राउन अपने जो बनाए हुए प्राइज के साथ खड़े हुए हैं सैटर्न 5 को। और ये आ, दुनिया का उस समय का सबसे बड़ा रॉकेट था। आज भी मैं सोचता हूँ करीब करीब सबसे बड़ा होना चाहिए, लेकिन अब इससे बड़ा एक आएगा। चलिए आगे बढ़े। ये रॉकेट्स का कंपैरिजन है। हाउ डू आई गो बैक? Sir, press the back arrow key. ओके। Or if you go to extreme. यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, ये अपना GSLV Mk3 है, जो अपना सबसे बड़ा इस समय का रॉकेट है इंडिया का, इसरो का ये। और ये जो है स्पेस शटल है। आप कंपेयर कीजिए स्पेस शटल वाला जो रॉकेट और स्पेस शटल का खुद का इंजन मिला के 27,000 किलोग्राम ट्रांसफर ऑर्बिट में या लो अर्थ ऑर्बिट में भेज सकते हैं। ये 8,000 किलोग्राम हम पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी जगह ग्रो करने के लिए बाकी। ये एरियान है जो फ्रेंच है, जिस पे अपने सारे इंसेट गए हैं। जो बड़े इंसेट हमने बनाए हैं वो सब इस एरियान पे गए। हमसे मेरा मतलब इंडिया से है, और स्पेसिफिकली कभी कभी इसरो से। हालांकि मैं नासा के लिए भी यूज करता हूँ, इसलिए आप कॉन्टेक्स्ट से समझ जाएंगे कि कौन सा किस कॉन्टेक्स्ट में है। ये लाइनें क्यों आ रही हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा। आपको दिख रही है नीली लाइनें स्क्रीन पर? हाँ, शायद दिख रही है, माउस की शायद वजह से आ रही। आपके माउस से है, लेकिन कोई बात नहीं, हम स्लाइड देख सकते हैं। अब नहीं करूंगा आगे। तो कमांड सर्विस मॉड्यूल में 3 एस्ट्रोनॉट जाते हैं, और चंद्रमा पे उतरते समय 2 उतरते हैं। तीसरा चक्कर लगाता रहता है चंद्रमा के ऑर्बिट। Here is the trajectory of how we go to the moon, at least how Apollo went. So the blue one is the ascent part. We leave some part of Earth like Florida, and then we go up around the orbit. We make what we call a figure of 8, and then we detach the lunar module somewhere here in the orbit of the moon, and then we land the lunar module, LEM, lunar excursion module, made by Grumman at that time, which is merged with Northrop Grumman, where some of our relatives, Dadheech, have worked as directors of research. So when we come back, we fire the ascent stage. The descent stage stays on the moon, and on its leg is LSAP. Remember I told you about a experiment package? The battery or the radioisotope thermal generator for that stays on that leg. We'll see that in the next slide.
So then we come back, and then when we come back, we allow the atmosphere to slow us down. So the outer skin temperature becomes 3000 degrees, and then it slows down through parachutes and lands in the ocean. This happened for all the missions. Sorry, I don't know how to clean this marking. I'm not doing it, as far as I know. See, I'm not doing it, so it's something else that is doing it. But that's okay, sir. I think let's continue. The Deepak ji, kindly see if there is anything we can do, or somebody. Here are the three people: Neil Armstrong on the left, Mike Collins on the center, right is Buzz Aldrin. Buzz's real name is Edwin Aldrin. So he's the only one alive. And I have a photo with him which I've shown you. You all have shown it. Mike Collins died within last couple of hours. Neil Armstrong, do you know what he did? Like us, a lot of us Indian Hindus or any Hindu wish is that we go from dust to dust, that we are converted to ashes. He was desirous, being born and brought up as a universal human being, more than the Christian that he was, more than the Hindu. He decided that his ashes should be dispersed in the ocean. Buzz is still around. We'll tell you in question answer some anecdotes about him. This is the first landing. Buzz Aldrin is taking this picture. Neil Armstrong is unfurling the flag. This is the descent stage of the lunar module. Ascent stage is also attached and up there waiting for these two astronauts to go up. What you are seeing is the seismic experiments here and reflectors, laser reflectors, which can then measure accurate distance between moon and the earth and whatever. The leg where the power for all these experiments comes is here, on which the Apollo Lunar Scientific Experiment Package is located. मैं खुद इस पैकेज को अपोलो 13 में सुरक्षित रूप से बिना यूरेनियम लीक हुए एटमॉस्फेयर के थ्रू पैसिफिक ओशन में गिराने वाली टीम का मेंबर था.